So starting with the new chapter, and name of the chapter is portfolio management. First of all, we'll have some like very basic discussion about the learning point that we have said this chapter. In this chapter we have learning points like this. See, basically the term portfolio stands for the investment, and we are going to understand that say how we are going to manage the investments. There are basically the investment that we can say is the investment that we have in let us say risk free investment opportunity, then we understand that say there are investment which have the risk. Now what are the examples of the risk free investment opportunity? We can say that say if at all you make investment in any central government security, you make investment in any state government security, you make investment in Reserve Bank of India bond, these are the examples of the absolutely risk free investment. As against that, say we have the number of investment opportunities where there is an element of the risk. It includes if at all you make investment in any of the business. Let us say that say one of my friend is say going to start the business of manufacturing of bearings, and he requires an investment partner. मेरे पास कुछ पैसा है तो मैंने उसको दिया, and I told him that say I want to make investment in your business, say as an investment partner. That is what's an investment opportunity where there is an element of the risk. Second, you may make investment in any of the property. That is what we understand is a real estate. We understand that say when you make investment in real estate, then in that case there is a kind of risk of the price, risk of the liquidity. मुझे लग रहा है कि कोई एक एरिया जो है वो अच्छा डेवलप होने वाला है, so I make investment in any commercial property or housing property say in that area with an expectation that say भी मुझे थोड़ा rental income मिलेगा, and at the same time say over the time period मुझे price appreciation मिलेगा. So I can make investment in this kind of real estate, and in this say definitely there is a risk. और दूसरा जो हम लोग समझते हैं that you make investment in the stock market. तो हमारा ये जो चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें हम लोग ये सिक्योरिटीज़ के इन्वेस्टमेंट का बात करने वाले हैं. से एज अ स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर दैट से ये जो सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में अवेलेबल होता है. ऑफकोर्स उसका रिस्क एंड रिटर्न, उसका प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग होता है. वी आर गोइंग टू हैव द मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट. This is the way we are going to have understanding of the chapter called portfolio management. I would like to relate to say certain other chapters of the financial management that we have. जैसे कि suppose we study a concept called capital structure theories. तो capital structure theories का concept क्या बताता है? Capital structure theories का concept कुछ ऐसा बताता है कि हमको हमारा capital structure कैसे form करना चाहिए. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस इन इक्विटी एंड डेट. तो भाई कैसे फॉर्म करना चाहिए, उसके लिए वी हैव सर्टन थियोरीज जिसका नाम है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, देन ग्रेहाम एंड डॉड मॉडल, लिंटनर मॉडल. लाइक दैट से वी हैव सर्टन like the theories of the dividend policy with which say you can determine that say how the equity dividend should be paid. I'm sorry, I mentioned wrongly. Traditional approach, trade-off approach, picking order theory. So these are the capital structure theories that you have, so with which say you can take a decision that say how you should form the capital structure, कितना डेट प्रपोर्शन रखना चाहिए. कुछ वैसे ही हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी है.
over here we are going to learn say certain theories with which we are going to understand that say how will you make the investment say in the different securities. भाई हम लोग कुछ ऐसा लर्न करने वाले हैं, हम लोग कुछ ऐसा लर्न करने वाले हैं दैट से हाउ यू शुड डिज़ाइन द पोर्टफोलियो एज पर मार्कोविस मॉडल. We are going to understand that say how we should form the portfolio as per capital asset pricing model. We are going to understand that say how you should form the portfolio as per constant mix theory. And so on, we are going to have say the different kind of the theories say to understand that say how you should form the portfolio. And this is what say the learning point that we have throughout the chapter. Throughout the chapter हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे कि हमको इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना चाहिए. पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है इन्वेस्टमेंट. सो हाउ यू शुड मेक द इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट से वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ओवर हियर से इन दिस एंटायर सिंपल चैप्टर. नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस इज लाइक दिस. अगर हम लोग हमारा चैप्टर कुछ ऐसा याद करें, कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इन दैट से वी वर मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द डिसीजन मेकिंग. तो एनपीवी में हमारा क्या होता था, सिंपल होता था दैट से प्रोजेक्ट का एनपीवी कैलकुलेट करो एंड इफ इट इज़ पॉजिटिव द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो. अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो जो प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा एनपीवी है उसको एक्सेप्ट करो. दैट्स इट. दैट इज़ अ वे सिंपली डिसीजन मेकिंग दैट वी हैड. ना यहाँ पे ये चैप्टर में हम लोग ऐसा लर्न करेंगे कि कुछ सिक्योरिटीज़ होगा, जैसे कि सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी, सिक्योरिटी डी. उसका रिटर्न का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और उसका रिस्क का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को देख के डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क को लेके भी डिसीजन नहीं लेना है. वी आर रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट वी टेक बोथ ऑफ देम इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग. And this is what's the new point that we will be having learning over here because generally हम लोग ऐसा समझते हैं कि with the increase in the risk return will increase, but at the same time say there you are required to find certain investment opportunities कि जिसमें risk is within the tolerance limit and the return is higher so far possible. तो ऐसा हम लोग यहाँ पे कुछ learn करेंगे. And initially we are going to have a very simple examples wherein we are not going to focus on the strategies कि भी कैसे आपको पोर्टफोलियो फॉर्म करना चाहिए, आपको कैसे सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन करना चाहिए. उन सब के लिए हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले नहीं हैं. हम लोग डिस्कशन डायरेक्टली इस बात का करेंगे सबसे पहले कि रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होता है, रिस्क का कैलकुलेशन कैसे होता है. दैट इज़ अ वे इनिशियली वी आर गोइंग टू हैव द डिस्कशन अबाउट द रिटर्न एंड द रिस्क कैलकुलेशन. उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़. तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर. एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग टू हैव द लर्निंग ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. रिटर्न हेडिंग लर्निंग पॉइंट ऑफ द चैप्टर. In that, write down first point. In this chapter, we are going to learn how to select securities to form a portfolio. Second point,
there are two types of investment. One, risk free investment, and second, investments with risk. Yeah, before I proceed further, one more thing that I would like to tell all of you, that जब भी हम लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमको रिटर्न बहुत ही कम मिलता है, सर्टन मिलता है, बट द रिटर्न्स आर वेरी 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 लेस, एंड प्रैक्टिकली इट मे हैपन नंबर ऑफ टाइम्स कि जो भी वो रिटर्न मिलता है हमारा, वो रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है. सो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी आपका फंड्स है ना, उसका परचेसिंग पावर ग्रेजुअली डिटोरिएट होता है इंस्टेड ऑफ से इंक्रीजिंग इन द परचेसिंग पावर. दैट इज फॉर द काइंड ऑफ लाइक द लिमिटेशन दैट यू हैव in risk free investment. That is the reason say basically you don't have a choice but to make investment in securities where risk element is there. Third point, risk free investment opportunity does not have any risk element, comma, at the same time it offers very less return. Many a times it does not cover inflation also. Fourth point, investors have no choice but to make investment in securities having risk so that good return can be realized. Fifth point, in this chapter we are going to learn how to form a portfolio, comma, consisting of different securities
so as to get a return with minimization of risk. Full stop. You don't have to write anything. First of all, let me explain you. Discussing a question. Mr. X had purchased a security for a price of rupees 200 at the beginning of the year. At the end of the year, price of the security found to be 210. The investor received dividend of rupees 15. क्वेश्चन में ये पूछा है, कैलकुलेट रिटर्न टू द इन्वेस्टर. I request you to give answer for the question in the chat box. So over here the question is providing the information like this, that investor ने सिक्योरिटी खरीदा 200 रुपये में, उनको एक साल के बाद क्या हुआ, डिविडेंड मिला 15 रुपये और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी हो गया 210. यूजुअली, ज़रूरी नहीं है बट यूजुअली द रिटर्न्स आर कैलकुलेटेड इन परसेंटेज. तो उसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, रिटर्न इज कैलकुलेटेड एज D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ऐसे रिटर्न किया जाएगा. यानी कि डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड मिला 15 रुपये प्लस 210 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100. यानी बेसिकली क्या हुआ, ये 10 रुपये का प्राइस अप्रिशिएशन मिला प्लस 15 रुपये का डिविडेंड, तो कुल मिला के 25 रुपये मिले. सो 25 ऑन 200, so the return is 12.5%. So basically the return is calculated as, say, the dividend income plus price change of the security. So I request all of you to write down answer along with me. First one, write down, return is calculated taking into account dividend income and price change of the security. Second point, usually return is calculated in percentage term. ज़रूरी नहीं है बट यूजुअली ऐसा किया जाता है. It is D1 plus P1 minus P0 divided by P0 into 100. Dividend is an amount of rupees 15. 210 minus 200 divided by 200 into 100. So 25 upon 200 into 100, 12.5%. That is the way the return is calculated.